Good morning, my dear kids. Hope you all are revising the modules and watching your English videos. Today again, your teacher welcomes you all in your own class. English is fun. Students, आपको याद है? I have taught you how to write an application. क्या हुआ? अब ऐसे क्या देखने लगे? I know, जब भी मैं आप लोगों को टीच करती हूँ, तो सब टॉकिंग में मस्त रहते हैं। एंड लास्ट में होता क्या है? आपकी मैम के सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। एंड अगर कोई ये कह देता है कि हैप्पी मैम आपके स्टूडेंट्स पे कुछ नहीं आता, तो आपकी मैम का ये हाल हो जाता है। मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो आप क्या चाहते हो कि आपकी मैम हमेशा गुस्सा करें? नो मैम। So my dear students, come with me and let's recapitulate the application in short and try to attempt it. So, हम एप्लीकेशन तब राइट करते हैं जब हमें लीव लेने के लिए रिक्वेस्ट करनी होती है। अब चाहे वो बीमार पड़ने पे हो, कोई इम्पोर्टेंट काम के लिए हो, उसमें हमें परमिशन लेनी होती है। इस रिक्वेस्ट को हम राइट करके किसी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन या फिर अथॉरिटी को सबमिट करते हैं ताकि वो हमें छुट्टी दे सके। So students, today in this module, you will have to attempt the application based on sick leave. And your question is, write an application to your principal requesting him to grant you leave for 2 days as you are sick. That means आपको एक एप्लीकेशन राइट करनी है, इसको अपने प्रिंसिपल को, और उनसे ये रिक्वेस्ट करना है कि वो आपको बीमार पड़ने पे 2 डेज की लीव दे दें। Now students, you have to fill all these blanks yourself. Let's see कितने लोगों को सीक्वेंस वाइज एप्लीकेशन फॉर्मेट लर्न है। My dear students, I will come up with the solution in the next video. So, till then, attempt the application. Wear mask, follow hygiene, maintain social distancing. Thanks for watching. See you in next video. Bye bye.